Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4. This is the cover page of your book, English Grammar plus Skills Unleashed workbook. And today we are going to do chapter 6 and the name of the chapter is Nouns. So let's begin the chapter. We have learned about nouns from our smaller classes. In smaller classes we call it as naming words. छोटी classes में जब हम noun पढ़ते थे तो उसमें हम इसे naming words के नाम से जानते थे. But now we are grown up, अब हम बड़े हो गए, so we are going to learn about those naming words. उसका नाम बदल के यहाँ पे noun कर दिया गया है. So read the sentences about Meenu. Meenu यहाँ पे आपको दिख रही है. There is a picture and it is such a beautiful picture here. And I think they are playing. They are in their garden. Let's see. Meenu lives in a cottage with her parents. अपने parents के साथ cottage में रहती है. She goes to nearby school every day. School जो पास में ही है वहाँ जाती है daily. She has a little brother. उसका एक छोटा भाई है. She loves him the most. अपने भाई को सबसे ज़्यादा प्यार करती है. Her father is a gardener. उसके father यहाँ पे दिख रहे हैं. And he is a gardener. He earns little money. उसके फादर क्योंकि गार्डनर है तो उनकी वो कम पैसे कमा पाते हैं. All the words given in red are noun. So जो भी words यहाँ पर रेड कलर से लिख रहे हैं, मीनू, कॉटेज, पेरेंट्स, स्कूल, ब्रदर, फादर, गार्डन, मनी, जितने भी रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सारे यहाँ पे नाउन है. Okay, Meenu, parents, brother, father and gardener are the name of people. Meenu एक लड़की है, एक person है, parents भी एक person है, brother एक इंसान person है, father is a person and gardener is a person. So these are the name of people, लोगों के नाम है. Cottage and school is the name of the place. Cottage और school जो यहाँ पे जगहों के नाम है, place के नाम है. And money is the name of a thing. Money एक चीज है, so that's why it is called thing. And these are the naming words. There are some animals also. Those are also called naming words. Now let's learn what is a noun. Here the definition is given here. A noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun क्या है? किसी भी person, place, animal या फिर thing के नाम को हम noun कहते हैं. Now some exercise is given here. Let's do it, children. So read the following sentences and underline the nouns. Shopkeeper sells fruits and vegetables. अब यहाँ पे person का नाम दिख रहा है तो उसे underline करिए. Place का नाम दिख रहा है तो उसे underline करिए. Animal का नाम दिख रहा है या फिर thing का नाम दिख रहा है तो उसे हमें underline करना है. Shopkeeper is a person. Fruit is a thing. And vegetable is also a thing. So we have underlined these three. Now, grandfather went for a walk. So here grandfather is a noun. There is a clay lamp on the table. So here clay lamp and the table. Both are to be underlined. दोनों को underline करना है because they are noun. A duck was swimming in the water. So यहाँ पे duck and water is the noun. Father has bought a bouquet. So here we have to underline father क्योंकि एक person का नाम है. And bouquet is also a noun. We are going to read about this in the next class or in the next chapters. Sonali put her books on the shelf. So यहाँ पे Sonali, books and shelf. These three are the nouns given here. Now next comes the kinds of noun. कौन कौन से तरीके होते हैं nouns के? Let's read. First is a proper noun. A proper noun always begins with a capital letter. This is to be kept in mind. So we live in Mumbai. His name is Ramesh. Sunday comes after Saturday. Diwali is a festival of lights. So यहाँ पे देखिए first sentence में कह रहा है we live in Mumbai. मुंबई एक जगह का नाम है. मुंबई सिर्फ एक है इसलिए ये proper noun है. His name is Ramesh. तो ये जो बच्चा है वो एक ही है यहाँ पे. So that's why it is a proper noun. Sunday comes after Saturday. Name of the days also is a proper noun and Diwali is a festival. जल्दी आने वाली है. So Diwali is also a proper noun. So जो one होते हैं वो हमारे
प्रॉपर नाउन होते हैं. In the given example, all the words in red are the name of some of the particular place, day, person or festival. So these are proper noun. The name of a particular person, particular means कोई specific इंसान, कोई एक इंसान या फिर एक place या फिर एक किसी thing की बात होती है, that is called proper noun. Here we can see this boy is frightened and here's a dog who is barking at the boy. Now we are going to learn about common nouns. Now look at these sentences. A girl is there in the park. My school is on RK Road. The dog is barking at you and he lives in a big city. इसमें the common names given to every person, place or thing of the same kind is called a common noun. So एक जैसी चीजों की जब हम बात करते हैं we call it common noun. यहाँ पे girl कोई भी गर्ल हो सकती है. इन क्लास में एक बहुत सारी गर्ल्स होती है तो उसमें से कोई भी गर्ल हो सकती है. पार्क भी कोई भी पार्क हो सकता है. स्कूल भी कोई भी हो सकता है. डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, बहुत सारे डॉग है. एंड सिटी ऑल्सो कैन बी एनी. सो द थिंग, द पर्सन, द प्लेस और द एनिमल, जो कोई भी हो सकता है, एनी, वो होते हैं हमारे common nouns. Now let's do the exercise given here. So I am going to do some, children, and you have to do the rest in this. Given below is the list of some common nouns. कुछ common nouns दिए गए हैं. Write appropriate proper noun for each of the following. So ये कुछ common noun दिए गए हैं. इनके लिए हमें proper noun लिखने हैं. So first one is person. Person, कोई भी person का नाम लिख सकते हैं. I am writing Ravi here. Building can be, we can write Taj Mahal. Taj Mahal is a building. एक ही है. Okay, Taj Mahal. Next, country. We are living in India, so India is a country. Common names दिए हैं, proper names लिखने हैं हमें. So रवि एक boy है, India एक country है, ताज महल एक building है, city मेरठ. Next, month can be, कोई भी महीना हो सकता है, जनवरी. Now ocean can be any. We are writing Pacific Ocean. Next is day can be, Monday लिख देते हैं. चलो, this is the first day of the week. Next, king can be Akbar. And the rest four are your homework, children. You can write any mountain name here like Himalaya or K2. The planets can be Mercury, Venus, Earth. Leader can be any leader, any political leader or any other leader that you want. And state can be the state where you live. So you can write the name like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. So these are the states. Now quickly let's come to the collective nouns. Collect का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना. So in this we are going to talk about a collection of something. किसी चीज के ग्रुप की बात करेंगे हम इसमें. Now read these sentences. Some sentences are given here. A bunch of keys is on the table. एक टेबल है, उसके ऊपर कुछ चाबी रखे हैं और वो एक चाबी नहीं है, बहुत सारी चाबियों को एक गुच्छे में करके रखा गया है. So here we are talking about the keys. So bunch of keys means चाबियों का गुच्छा. A fleet of ships. शिप्स का ग्रुप को हम फ्लीट कहते हैं. शिप्स मीन्स जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं आपके सी में, दोज आर कॉल्ड शिप्स. शी सॉ अ हर्ड ऑफ गोट्स. गोट्स के ग्रुप को बहुत सारी गोट मिल जाए तो आप कहेंगे हर्ड ऑफ गोट्स. आई एम इन द फुटबॉल टीम. तो आपने बहुत सारे दोस्तों ने आपके मिलके एक टीम बनाई, फुटबॉल की टीम. सो ग्रुप को हम वो बच्चे, वो स्पोर्ट्स मैन या वो बच्चे जो फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, वो सारे मिलके एक टीम बनाते हैं. सो यहाँ पे टीम इज द कलेक्टिव नाउन. नेम्स दैट आर यूज्ड इन द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल और थिंग आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. सो किसी भी चीज के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. Now look at the list of collective nouns here. Some list is given here. Group of thieves को हम gang कहते हैं. Listeners is called audience. Soldiers, group of soldier
और bushes और cars is called army. Ships के ग्रुप को fleet कहते हैं. Stars के ग्रुप को galaxy. Buffalo, cattle, goat, deer के ग्रुप को herd कहते हैं. Lion के ग्रुप को pride और peacock के ग्रुप को भी pride कहते हैं. Flowers, बहुत सारे फूल इकट्ठे करके हमने क्या बनवाया है, बुके बनवाया है, तो फ्लावर्स के ग्रुप को हम बुके कहते हैं. आर्टिस्ट, डांसर, एक्टर, सिंगर के ग्रुप को हम ट्रूप कहते हैं. स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं. टीचर आपकी कहती है क्लास बी क्वाइट, इसका मतलब वो सारे बच्चों जो उस क्लास में है उन सबको चुप रहने को कह रही है. सो हियर द स्टूडेंट्स आर आल्सो ग्रुप्ड एज क्लास, एम्प्लॉयज एज स्टाफ. स्टिक्स को हम बंडल कहते हैं. कॉइन्स, पिक्चर एंड स्टैम्प्स आर कॉल्ड एज collection. Trees को forest and shoal is called as fish is called as shoal. Keys bunch. Banana is also called bunch and grapes के गुच्छे को भी हम bunch कहते हैं. So children, let's come to the exercise. See exercise in your book. So here some words are given. We are going to fill them here. We have to write down here the collective nouns are given. And we have to write the proper noun for these. So here the first one is the army of. Yes, we are going to talk about the soldiers. Soldier के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं. Next, a string of pearls. आपने देखा है मोतियों की माला को देखा है, तो बहुत सारे मोतियों को मिला के एक माला बनती है and that is called string here. So जो भी बेटा हम ऊपर करेंगे उस पे हम टिक कर देंगे. So we have ticked here also. Next is a crowd of people. Next, a cluster of stars. A bundle of sticks. A class of children or students. A library of books. Whenever we go to a library, what we see? There are so many books. So a library of books. A team of players. A colony of ants. आपने देखा एंड्स हमेशा ग्रुप में ही चलती हैं, लाइन से चलती हैं. सो इट इज कॉल्ड अ कॉलोनी ऑफ एंड्स. अ वेड ऑफ, क्या बच गया हमारा? नोट्स बच गया. सो अ वेड ऑफ नोट्स. सो these were the answer, children, to the given questions. I hope you have completed it. Now let's come to the next page. Now the next topic is our abstract noun. Here we have to read some sentences. शीतल is praised for her beauty. अपनी खूबसूरती के लिए शीतल जानी जाती है. She is very beauty. Honesty is the best policy. ईमानदारी, honesty means ईमानदारी. My teacher is known for her intelligence. And wisdom always wins. Wisdom means दयालु होना हमेशा जीतता है. All the words given in red tell the name of some quality. कुछ क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, किसी की खूबसूरती के, किसी के ऑनेस्टी के, किसी की इंटेलिजेंस या किसी के विजडम के बारे में बता रहे हैं. These are abstract noun. इन्हें abstract noun कहा जाता है. So nouns that refer to an idea, feeling or thought are known as abstract noun. Abstract noun क्या होते हैं? कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग या फिर किसी थॉट के बारे में जो बात करते हैं, that is called abstract noun. Abstract nouns are usually in singular number. 1 नंबर में लिखते हैं इसे, इसका प्लूरल नहीं होता. The countable abstract nouns can be plural. जो काउंटेबल है उन्हें हम प्लूरल में लिख सकते हैं. However, these nouns cannot be touched, seen, heard or smelled. So ये मेन पॉइंट है abstract noun का कि ये जो नाउन है इन्हें हम देख नहीं सकते. We cannot touch it, we cannot see it, we cannot hear it or we cannot smell it. हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं. These things can be felt only. हम इसे फील कर सकते हैं. ब्यूटी को हम फील कर सकते हैं, हम ब्यूटी को देख नहीं सकते. ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, ईमानदारी को हम उसे देख नहीं सकते. So all the abstracts noun cannot be seen, heard, touched or smelled. So here one exercise is given, children.
Let's do the exercise. So children, we are going to do the exercise here. Here this grid is given. We have to find the answer from here. यहाँ से answer ढूंढना है और यहाँ पे हमें लिखना है. So I'm writing it here only, and you can mark it in the grid, and also you can write here. So okay, the first one is life. So life का we have to write down the opposite abstract noun, and the life is death here. We can see death is written here. We have to mark it like this. Now destruction becomes creation. So here creation is given somewhere. Yes, this is creation. We have to mark like this. Happiness is sorrow. Again, we are going to find this sorrow is written here. Next, reward is punishment. अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो पनिशमेंट भी मिलती है बुरे काम करने पे. नेक्स्ट, lend. lend means किसी को दे देना. So its opposite is borrow, means किसी से मांग लेना. Next is politeness. politeness का opposite है rudeness. किसी से प्यार से बात करना is politeness. किसी से गुस्सा करके बात करना, that is called rudeness. Next is strength. The opposite of strength is weakness. And the last one is bravery. The opposite of bravery is coward. So we have written the answers here, and as I have done here, I have found the answers here. You all have to find all these answers here. You have to mark here. So this was the question and answer, children. Next, we can form abstract noun from common nouns, verbs and adjective. So कुछ abstract noun हम common noun से भी बना सकते हैं, verb से भी बना सकते हैं और adjective से भी बना सकते हैं. Here some table is given. Let's see. कॉमन नाउन से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, वर्ब से वर्ब एब्स्ट्रैक्ट और नाउन यहाँ पे बनाया है. देन ओके, सॉरी, हियर वन मिस्टेक इज देयर. यू हैव टू करेक्ट दिस चिल्ड्रन. ये एब्स्ट्रैक्ट मिसप्रिंट होके इधर आ गया. यू हैव टू राइट इट हियर. ओके, सो हियर कॉमन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज गिवन, वर्ब is given, and from that we have made abstract noun. Again verb से हमें abstract noun बनाया and common noun से abstract noun हमने यहाँ पे बना दिया है. Let's see. brother, brotherhood, भाई से भाईचारा. mother, motherhood. child, childhood. friend, friendship. leader, leadership. and king, kingship. Again some verbs are given, means कुछ काम दिए गए हैं. verb का मतलब होता है काम. So know, knowledge, it becomes knowledge. Laugh becomes laughter. behave becomes behavior. marry, marriage. sell becomes sale, and think becomes thought. So children, you have to learn the given abstract nouns so that you can command on these. Now some exercise is given, children, here. Let's do that. So first question here is change the following words into abstract noun. So here the strong becomes strength. It becomes strength here. Child becomes childhood. Third one is man becomes manhood. Long becomes length. Wise becomes wisdom. And scholar becomes scholarship. So these are the abstract nouns that we have made from the given words, children, and it's your duty to learn these abstract nouns that we have done here. So children, this was all for today in this chapter. In this chapter we have learned about nouns, proper nouns, common nouns, abstract noun and collective nouns. I want you all to recall everything and learn the collective nouns and abstract nouns so that you can have command on that. So this was all for today in this video. Till then, stay latent.